Hey guys, so today we will be discussing another topic of collective bargaining. As मैंने आपको बोला था हम कुछ दिन तक collective bargaining के topics पढ़ेंगे. Okay, so today a second important topic of collective bargaining we're going to discuss, that is behavioral theory of labor negotiations. Okay, and yes, you can also join my page HR with Sanchita on Telegram also. जैसे मेरा ये चैनल है सेम नेम HR with Sanchita Telegram पे भी, उसमें आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे जो भी मैं कराऊंगी, जो भी मैं मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ. एंड ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स अगर मैं क्लासेस दूं तो ये सब भी आपको पता लग जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक येस्टरडे जो हमने किया था. तो हु हैज डिस्क्राइब्ड द नेचर ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एज मार्केटिंग, गवर्नमेंटल, इंडस्ट्रियल गवर्नेंस एंड मैनेजरियल कंसेप्ट. तो कल आपको मैंने बहुत अच्छे से मार्केटिंग कंसेप्ट बताया है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का गवर्नमेंटल कंसेप्ट बताया है, इंडस्ट्रियल गवर्नेंस कंसेप्ट बताया है और मैनेजरियल कंसेप्ट बताया है और बहुत डेप्थ में हमने पढ़ा है. नाउ टेल मी हु हैज गिवन दिस, who has given these concepts or who has given these theories? Give it a thought. Is it J.T. Dunlop? Is it Sidney and Beatrice Webb? Is it Richard Walton and Robert McHenry? Or is it Chamberlain and Kuhn? So it is Neil W. Chamberlain and Kuhn, James W. Kuhn. तो कल हमने चैम्बरलेन्स की थ्योरी पढ़ी थी. We did all this marketing concept, governmental concept, industrial governance concept and managerial concept. So this theory which we did yesterday has been given by Neil W. Chamberlain and James W. Kuhn. And those who have not seen that video, make sure आप recorded देख लें क्योंकि कल ही हमने की है. Before I start the topic for today, that is behavioral theory of labor negotiations, I want you to answer that who has given the behavioral theory of labor negotiations. आप अपने mind में सोच सकते हैं, ठीक है. जब मैं आपको आंसर दिखा दूंगी then you'll know that you are correct or you are wrong. So who has given the behavioral theory of labor negotiations? Richard Walton and McHenry, Chamberlain, Sidney and Beatrice Webb, J.T. Dunlop. तो एक ये Chamberlain वाला ऑप्शन तो क्रॉस हो ही गया क्योंकि अभी हमने पीछे ही Chamberlain से रिलेटेड क्वेश्चन किया है, राइट. सो नाउ हु हैज गिवन इट. अब इन तीनों में बताइए किसने दिया है. ओके, सो who has given the behavioral theory of labor negotiations? Richard Walton and Robert McHenry. So Richard Walton and Robert McHenry have given the behavioral theory of labor negotiations. So make it a note. And now let's start that what is this theory. अब इसे हम डेप्थ में पढ़ते हैं. So I'm telling you it's a very easy theory. जो हमने कल पढ़ी थी उससे ये काफी ज्यादा easy है हमारे behavioral theory of labor negotiations. So obviously we just did it that this theory has been given by Walton and McHenry and it is also called the behavioral theory of labor negotiations. So according to them, the process of collective bargaining has 4 sub-processes which are also called 4 processes of collective bargaining. तो obviously कल भी हमने collective bargaining की ही theory पढ़ी जो चैम्बरलेन की थी और आज भी हम collective bargaining की ही थ्योरी पढ़ रहे हैं, दैट इज द बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लेबर नेगोशिएशंस. अब इस थ्योरी में वॉल्टन एंड मैकहर्सी ने कहा है कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस होता है इट हैज 4 सब प्रोसेसेस. नाउ व्हाट आर दोस 4 सब प्रोसेसेस? सो द फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, सेकंड वन इज इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, थर्ड वन इज एटीट्यूडिनल रीस्ट्रक्चरिंग and the fourth one is intra-organizational bargaining. Okay, so these are the 4 sub processes that are there. Now we'll study each one of these in depth. Now let's start with distributive bargaining. Okay, so it involves bargaining over economic issues like wages, salaries and bonus. One party gains at the loss of other party, so it results in a win-lose situation. So here what are the terms that you need to remember? First of all, distributive bargaining is a bargaining related to economic issues. Generally it deals with the economic issues like wages से related आप bargaining कर रहे हैं, salary से related कर रहे हैं, labor और management मिलके labor बोल रहा है ज्यादा salary दो, management बोल रहा है भाई हम कम देंगे, राइट. लेबर बोल रहा है जल्दी जल्दी बोनस दो, ज्यादा बोनस दो, मैनेजमेंट बोल रहा है नहीं इतना बोनस नहीं दे सकते, प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं. ओके, सो इट जनरली डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज. नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू रिमेंबर इज दैट वन पार्टी गेन्स एट द लॉस ऑफ अदर पार्टी, so it results in a win-lose situation. Okay, so here win-lose is the key term. अब यहाँ पे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में, एक पार्टी तो गेन करती है, एक पार्टी का प्रॉफिट हो जाता है. अब
दूसरी पार्टी का नुकसान हो जाता है. सो वन पार्टी गेन्स एट द लॉस ऑफ अदर पार्टी. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ये सिचुएशन देती हूँ. हमारा जो लेबर है, ओके, वो बोल रहा है कि आप हमें 10,000 रुपीज दो पर मंथ. ठीक है. नाउ मैनेजमेंट इज सेइंग नहीं दे सकते हम आपको 10,000, हमें लॉस हो जाएगा, हम आपको 9 ही देंगे. ओके, नहीं तो हमें लॉस हो जाएगा. अब कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या हुआ, बहुत ज्यादा बार्गेनिंग हुई और मैनेजमेंट को लेबर के आगे झुकना पड़ गया. उन्होंने, ठीक है, तो उनको अब 10,000 सैलरी मिलेगी. ठीक है, लेबर को. तो बताइए इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारे मैनेजमेंट का हो गया, क्योंकि वो तो नहीं चाह रहा था, ठीक है, देना 10,000, बट ऑब्वियसली कलेक्टिव बार्गेनिंग में लेबर जीत गया. राइट. सो लेबर के आगे झुकना पड़ा मैनेजमेंट को. राइट. सो here one party gains, so the labor is gaining at the loss of the management. Right. So this is there in distributive. Such a situation generates the negative feelings in the losing side and may even breed unhealthy labor management relations. तो अब जो पार्टी हारी, ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट हारा. ठीक है, क्योंकि उसने जो लेबर ने बोला उसको देना पड़ गया. तो यहाँ पे क्या होता है, फिर मैनेजमेंट के मन में नेगेटिव फीलिंग्स आ जाएंगी, क्योंकि मैनेजमेंट वाज द लूजिंग साइड हियर, एंड इट कैन बी वाइस वर्सा आल्सो. Okay, so management, it would generate negative feelings on the side of management, and it can also lead to arising of unhealthy labor management relations. ठीक है, तो अब फिर ना मैनेजमेंट के मन में थोड़ा रह जाएगा, यार इन्होंने ऐसे किया यार. ठीक है, तो फिर थोड़ी नेगेटिविटी आ जाएगी. So this type of bargaining is also known as conjunctive bargaining. So remember this term because sometimes it is asked. Okay, so conjunctive bargaining is also distributive bargaining. So distributive bargaining is another word for conjunctive bargaining. Right? Clear? Distributive bargaining, it is really easy. So सबसे पहले bargaining over economic issues like wages, salary, one party gains at the loss of other party. फिर जो party lose करती है उसके मन में generally negative feelings आ सकती हैं, which can lead to unhealthy labor management relations. And the another name of this type of bargaining is conjunctive bargaining. Clear? Okay. Now let's start integrative bargaining. Okay, so this type of bargaining involves a situation in which either both the parties have something to gain or at least none of the parties loses anything. ठीक है, अब integrative bargaining में integration हो जाता है. Okay, so इसमें क्या होता है, in which either both the parties have something to gain or at least none of the parties loses anything. या तो दोनों पार्टी का गेन होता है, okay, या तो कोई भी पार्टी कुछ भी लूज नहीं करती, मतलब नुकसान किसी का नहीं होता. या तो दोनों का गेन होगा, जो दोनों बार्गेनिंग पार्टीज है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें गेन नहीं हो रहा है, तो नुकसान भी नहीं होगा किसी का. Okay, so this type of bargaining involves a situation in which either both the parties have something to gain or at least none of the party loses anything. क्यों? नुकसान नहीं होता, या तो दोनों पार्टीज कुछ ना कुछ गेन करती है, ठीक है, और लूज कोई नहीं करता, नुकसान किसी का नहीं होता. सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ. अभी जो हमने पीछे पढ़ा था दैट वाज अ विन लूज सिचुएशन. हियर इट इज अ विन विन सिचुएशन इन इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग. फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन मैनेजमेंट में डिमांड इंक्रीज इन वर्किंग आवर्स इन रिटर्न फॉर जॉब सिक्योरिटी. अब ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. जब हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है, ओके, व्हेन आवर इकोनॉमी deteriorates, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, people have a fear of losing their jobs, right? people may have a fear कि हमारी नौकरी ना चले जाए. तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है, मैनेजमेंट बोल सकता है कि भाई आप थोड़ा ना, अब इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, आप थोड़ा देर तक काम करिए, वर्किंग आवर्स बढ़ाइए, और हम आपकी जॉब सिक्योर रखेंगे, हम आपको नहीं निकालेंगे. सो राइट, सो हियर इट इज अ सिचुएशन ना, विन विन सिचुएशन है. वर्कर्स की जॉब भी सिक्योर है और मैनेजमेंट को भी ज्यादा वर्किंग आवर्स मिल रहे हैं. राइट, सो दिस इज देयर. दिस टाइप ऑफ बार्गेनिंग इज ऑल्सो नोन एज कोऑपरेटिव और इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग. जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव को कंजंक्टिव बार्गेनिंग कहते थे, सो इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑपरेटिव और इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग. सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, कोऑपरेटिव और इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग. क्लियर? Now let's discuss attitudinal restructuring. Now you can understand from the name itself. Attitudinal restructuring means restructuring of our attitudes, right? Now you can understand from the first para itself. Attitudinal restructuring means changing the attitudes and beliefs of workers and management regarding each other so as to create an environment of mutual trust. अब यहाँ पे क्या हो रहा है?
here in attitudinal restructuring, you are changing the attitudes, thoughts and beliefs of workers and management towards each other. ऐसा हो सकता है कि workers के दिमाग में management के खिलाफ गलत feelings हो सकती है, तो आप उसको चेंज करेंगे एक पॉजिटिव वे में. और ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट के मन में वर्कर्स के खिलाफ गलत फीलिंग्स हो सकती हैं, तो उसको भी आप उनके एटीट्यूड्स को रीस्ट्रक्चर करेंगे एक पॉजिटिव सेंस में. यू आर चेंजिंग द एटीट्यूड्स एंड बिलीफ्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट्स रिगार्डिंग ईच अदर और टुवर्ड्स ईच अदर. अब अगर हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड्स हो जाएंगे एक दूसरे के लिए, वर्कर्स के मैनेजमेंट के लिए और मैनेजमेंट के वर्कर्स के लिए, सो व्हाट इट वुड लीड टू, इट वुड लीड to an environment of mutual trust, a positive environment. Okay, it would create an environment of mutual trust where both workers and management would trust each other, right, and would not have negative feelings towards each other. So this is attitudinal restructuring. अगर हम किसी बिल्डिंग को restructure करते हैं, जैसी है वो हम चेंज कर देते हैं, वैसी एटीट्यूड भी restructure होता है. Okay, we are changing the attitudes and beliefs in a positive way, not in a negative way. Okay, yes. Now, at kin situations mein attitudinal restructuring is required. So these are some of the situations that are listed where attitude is changed towards each other. When it is a lose-lose situation, that is when none of the party is ready to accommodate the interest of other party. In such a situation, negotiations come to a dead end and resultantly both sides have to lose. अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी collective bargaining हो रही है, ठीक है, और both the parties मतलब कि एक lose-lose situation पे आ गई है situation, ठीक है, कि आप ऐसे बार्गेनिंग कर रहे हो बट कोई दोनों ही पार्टीज का नुकसान हो रहा है, ठीक है, कोई भी पार्टीज एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी दोनों पार्टीज जिनके बीच में कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रही है, दे आर नॉट रेडी टू एकोमोडेट द इंटरेस्ट ऑफ अदर पार्टीज. तो देन व्हाट इट वुड लीड टू, नेगोशिएशंस would come to a dead end because कुछ negotiation आगे हो ही नहीं रहा है, because both the parties are not agreeing, ठीक है, एक दूसरे के इंटरेस्ट को accommodate करने के लिए. Then it would lead to a lose-lose situation. Now here attitudinal restructuring would come into the picture, ठीक है. अब इधर जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के इंटरेस्ट को accommodate करने के लिए तैयार नहीं है, then the attitudinal restructuring would come into the picture. Okay, now you will change the attitudes of both the parties towards each other, and then it may not lead to a lose-lose situation. मे भी एक विन विन सिचुएशन, हम एक ऐसे एग्रीमेंट पे आ जाए जहां पे दोनों पार्टीज कुछ गेन करें, राइट. सो ऐसे सिचुएशन में हमारा एटीट्यूडल रिस्ट्रक्चरिंग काम आता है. व्हेन देयर इज अ विन लूज सिचुएशन दैट जनरेट्स बिटरनेस इन द लूजिंग पार्टी. जब मैंने आपको फर्स्ट विन लूज वाला कराया था तो वहां पे वन पार्टी वाज लूजिंग एंड वन वाज विनिंग. सो और लूजिंग पार्टी के साथ क्या हो रहा था, लूजिंग पार्टी के मन में गलत आ रहा था, बिटरनेस आ रही थी विनिंग पार्टी के लिए. तो यहाँ पे भी फिर हम एटीट्यूड रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं लूजिंग पार्टी के विनिंग पार्टी के प्रति, right. Now the third situation where we can use attitudinal restructuring is now under both the situations the involved parties need to change their attitude in order to avoid generation of any hostility. जो मैंने आपको conditions discuss की, the two conditions that I discussed here, attitudinal restructuring is needed. It can work or not? Yes, of course it can work. Okay, you are changing the attitudes, the negative attitudes to पॉजिटिव एटीट्यूड्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों में नेगेटिविटी अराइज हो रही थी. सो यू हैव कन्वर्टेड दोस नेगेटिव एटीट्यूड्स टू पॉजिटिव एटीट्यूड्स. सो दिस इज हाउ यू आर डूइंग द एटीट्यूडनल रीस्ट्रक्चरिंग. ओके, क्लियर? एटीट्यूडनल रीस्ट्रक्चरिंग. Great. Now let's discuss the fourth sub process, that is the intra-organizational bargaining. This is a very easy one, intra-organizational. So this type of bargaining takes place within a trade union or within the management before the bargaining takes place between the management and the trade union. Ab generally what happens is management is one party and trade union is another party. So management is representing the employers and trade union is representing the employees and workers. So both of them do the collective bargaining. अब इससे पहले क्या होना चाहिए कि मैनेजमेंट के विदिन भी जो लोग हैं उनकी भी आपस में सुलह होनी चाहिए, right? They should agree on one point, and within the trade union also numerous workers are there. They should also agree on one point, right? So this intra-organizational bargaining takes place within a trade union first or
within the management before it is taking place between the management and the trade union. तो पहले management के within हो जाएगी और trade union के within हो जाएगी, तभी तो ये फिर आपस में bargain करेंगे. अगर trade union के जो different workers हैं, they have different perceptions, okay, they have different thinking, then how can they bargain the interest with the management? And same thing applies in the case of management as well. If management is also having different prerogatives related to different things, or they are having different perceptions related to different things, so how would they bargain with a trade union जब उनमें अपने आप में ही agreement नहीं है? So this is intra-organizational bargaining. First it takes place within a trade union and within the management, and then management and trade union agree. So this is it. I hope it is clear, and make sure that you revise yesterday's topic as well. Okay.